I do not remember. I taught biology to someone. Maybe I taught him cell and all this. Cell- I told him cell and all this copy. I told him. Okay. Anyway, come to the point. Point is that how many type of cells are there? Oh, good. One is no one cell is of two types. One is prokaryotic cells. Prokaryotic, prokaryotic, right? Prokaryotic cells, right? They do not have, they do not have, they do not have well-defined nucleus. Well-defined nucleus. Fine. Like if this is a cell, if this is a cell we have, right? So in eukaryotic cells like this is uh, uh, genetic material which we call DNA, right? We have DNA, and this is cytoplasm, right? Cytoplasm, and so nucleus is not there. Basically, it is not cytoplasm. It is called protoplasm. Protoplasm. Just listen me for a while. Protoplasm is nucleus, nucleus plus cytoplasm. Nucleus plus cytoplasm is known as protoplasm, right? And this is we have genetic genetic material, material, right? And inside protoplasm, this is, and this we call cell membrane, right? If hard covering formed, then it becomes cell wall, right? If hard covering is formed around it, then it is cell wall, right? Cell wall. Usually, this prokaryotic cell में जो examples हैं, they are you know bacteria, 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 blue green algae, blue green algae, and diatoms, right? And they have इनमें क्या होता है सेल डिवीजन अकर, तो मतलब reproduction occurs by uh, reproduction occurs of kind of uh, mitosis type. Basically इन लोगों में डीएनए इनमें reproduction is reproduction reproduction division of movement, division of DNA
Then division of cytoplasm, division of DNA and division of cytoplasm. Right. First DNA का division होगा, then cytoplasm का division होगा. In all cases, because since they have this kind of, so this is known as, so this is we have a prokaryotic cell, and another type of cell is known as eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Eukaryotic cells are of two types, right? इसमें क्या होता है, एक होता है plant cell, right, and another one is animal cell. Eukaryotic cells have well-defined nucleus, have well-defined nucleus, and they have membrane-bound organelles. Uh, membrane. They have they have cell organelles. Cell organelles are organelles. They are membrane-bound structures. Membrane-bound structure, right? Structure, right? Now, what happens in in plant cell? What happens? You know, there is. Oh my God, this is working. This is, we have a plant cell. In plant cell, this is, we say, cell wall. Plant cell have cell wall, right? And inside that it is having cell membrane. Inside that it is having cell membrane. This is called cell membrane, right? Then they have nucleus, right? Nucleus, nucleus is like this. This is nucleus, which is having nucleolus, which contains, which is factory for ribosomes, and here we are having chromatin threads, right? And major thing is that, so they have well-defined nucleus, right? They have cell wall, they have cell membrane, and their yes, and they have a large vacuum, right? They have a large vacuum. This is large vacuum. Vacuum, right? And this is a basic structure of plant cell, right? After that, we have a animal cell. In animal cell is like this. It has cell membrane. It has cell membrane. Yeah, it is having cell membrane, right? It has it has nucleus. Inside nucleus there is a nucleolus, and there are chromatin threads, right? So this is, we have nucleus, right?
they do not have vacuoles, large vacuoles they do not have, right? They have, you know here is also there. Here is also endoplasmic reticulum is also there. Endoplasmic reticulum is also there, right? And here also one end is attached to the nuclear membrane, and another is with cell membrane. And this is endoplasmic reticulum. They have, in spite of, after that they have, you know, they have mitochondria. All are having mitochondria, right? They have mitochondria. They are also having mitochondria, right? And they have lysosomes. This is lysosomes. There are lysosomes also present. Lysosome is, uh, lysosome are there, and other structures. Plastids is found in plant cells, not in animal cells. Plastids are found in plant cells. It is not present in animal cells. They are plastids. So this is the basic difference between a prokaryotic and eukaryotic cell. And eukaryotic, there is basic difference of cell wall, vacuole, and cell organelles both are having, right, and they are having plastics. But animal cells do not have plastics. So this is the basic difference we have. It is just an introduction about a cell. Now, should I rub this? Huh? Okay. So I'm going to rub. After that, you are talking about, you know, there is a cell, right? Inside cell, there is a nucleus, right? There is a nucleus, and inside nucleus, there is nucleolus, nucleolus, right? So this is we called nuclear membrane, nuclear membrane, right? This is we called nucleoplasm, nucleoplasm. This is called nucleolus, nucleolus, right? And as a whole, they form nucleus, nucleus, right? Here, here, here is, you know, synthesis of nucleolus, synthesis of RNA, right? uh, नहीं granules को क्या बोलते हैं? They are known as, sorry, ribosomes. Sorry, not RNA. That is called ribosomes. 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 And ribosomes are responsible for protein synthesis. Ribosomes are responsible for protein synthesis, and protein synthesis is responsible for characters. Characters, right? Did you understand? Nucleolus and nucleoplasm में there are chromatin threads. Chromatin threads. Chromatin threads are like this, right?
they are granulated structures. They have granules, right? Granulated structure. If you zoom your screen, then you can see I made some granules. These are granulated structure, right? These are known as chromatin threads. Chromatin threads. Yeah. You can say that fibers. So what happens? This is nucleolus, right? And during cell division and nucleus controls controls all cell functions, right? Why it is control all cell functions? Because for every function for every function there is a specific protein, right? And for every specific protein there is a ribosomes ribosomes which these proteins specific proteins formed by formed by ribosomes, right? And ribosomes are formed in nucleolus, and nucleolus is a part of nucleus, right? So it means nucleus is governing all the functions because it is controlling all the synthesis of protein, because protein, for every function there is a protein is required, right? Protein is basically made up of protein is basically made up of protein is basically basically made of made up of amino acids, amino acids, right? And amino acids, they are protein is a polymer. Protein is a polymer, right? And amino acids are mono monomer, basic units, right? And there is a nucleotide is there, so that is containing a pentose sugar. There is a pentose sugar, right? This is a pentose sugar. Pentose, there are five carbon atoms, right? Each terminal is each vertex of the polygon is representing to one carbon atom, right? There is a there is a phosphate, there is an nitrogenous base. Here is a base, nitrogenous base is there, and and there is a phosphate molecule, right? This is the basic unit of a basic unit. It is a nucleotide basically, nucleo nucleotide, which is made up of this pentose sugar, phosphate molecule, and a nitrogenous base, right? Nitrogenous base. Now what happens? So this is somewhat different type of nucleus. Why nucleus is important? Nucleus is important because it is responsible for protein synthesis, and protein is responsible for different functions, right?
So if there is any change in uh, sequences of DNA, sequences of nitrogenous base, right? Sequences of nitrogenous base, then there is change in characters. When change in protein, when change in sequence of nitrogenous bases, then change in protein. Then when change in protein, then there is change in characters, yeah, functions. When change in, and these change in functions are on genetic level, right? So they are transferred from one generation to another generation, right? And since and they these type of changes may leads to, if these type of genetic characters keep changing from one generation to another generation, so there may be chances of origin of a new species, a new from 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 unicellular to multicellular organisms are developed because of this only. There is a species develops in a million of years, right? A million of years. It is not a one day game. It is, sudden changes in the sequences of amino acids. There may be changes in amino sequences of amino acids due to maybe the mutation. Mutation means sudden changes which are not in our control, and sometimes we get radioactive radiation. They can change the genetic sequences, sequences of amino acids, so they lead to change in the function of cells. If that function keep carrying on in from one generation to another generation, so in a million of years time, there may be chances a new species develops, right? So this is we have, and should I rub this? Should I rub this? So okay. Now during a cell division, we are going to basically we you want to discuss about protein synthesis. Sorry, cell division. Cell division why? Matlab cell division is responsible for reproduction. Right? Reproduction is what? If we talk about reproduction, reproduction is ability to ability to re, to reproduce reproduce young ones young ones young ones of own kind, right? Young ones of own kind, right? In a from an apple tree, from when a flower of apple, yeah, from when a flower of mango undergo fertilization, then undergo fertilization, then embryo is formed, and then there is the mango comes out, right? From a mango tree you get mango. It does not happen that from a mango tree you get apple. Yeah, never happens this. So this is because of key reproduction means ability to reproduce young ones of own kinds, right? There may be difference in their shape and sizes, their sweetness, right, and other things. But a mango tree will give always mango tree. A dog give rise to a dog only, and a cat give rise to a cat only.
right? This is, and reproduction में सबसे जो ग्रॉस रूट लेवल पे होता है रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाट वी हैव कॉल्ड सेल डिवीजन, that we have cell division. Yeah, cell division means cell division means first division of nucleus, division of nucleus, which we call karyokinesis. Karyo Karyokinesis, right? Karyokinesis. Division of nucleus is karyokinesis, and division of cytoplasm. First division of nucleus, then division of cytoplasm, division of cytoplasm. That is known as cytokinesis. Cytokinesis, right? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि अगर एक सेल है तो एक सेल के अंदर, सॉरी, जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो पहले क्या होगा, ये सेल का, ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस में डिप्रेशन होगा, राइट, न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू होगा। न्यूक्लियस पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद फिर क्या होगा कि सेल का डिवीजन होगा, राइट, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट, एंड ये क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस इधर आ गए, राइट, एंड उसके बाद क्या हुआ कि हमारी दो सेल्स बन गई, राइट, दो सेल्स फॉर्म हो गई, राइट, ये दो सेल्स फॉर्म हो गई। इस ये सो फर्स्ट हेयर इज कैरियोकाइनेसिस, and then cytokinesis, cytokinesis, and after that you get two young ones, two daughter cells, two, daughter cells, right? This much you understand. This is a cockroach. Now, now what I remember is cell division is of two types, right? Cell division is of two types. One is known as meiosis. Another one is mitosis. Right? जैसे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बनाया, तो इसमें माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है, उससे दो डॉटर सेल बनेंगी, राइट, दो डॉटर सेल बनेंगी, और ये क्या है, ये मतलब डॉटर सेल क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब इसमें जो है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, एलील, there are in human beings there are 46 chromosome, in human beings 46 chromosomes, but
46 chromosomes and 23 pairs, राइट। इसमें से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें दोनों जो होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, बट 23rd क्रोमोसोम में एक एक्स होता है। अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल हो जाएगा, राइट। और अगर ये 22 प्लस एक्स वाई हो गया, राइट, तो ये, आई होप दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। ये 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 फीमेल बन गया और ये मेल हो गया, है ना। लेकिन ये जो होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है मियोसिस में। नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया शायद। माइटोसिस पहले होता है। माइटोसिस में ये मैंने उल्टा लिख दिया था। दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब यहाँ पे ये सेल्स हैप्लॉइड हैं, सॉरी डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड होती हैं, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी ये भी डिप्लॉयड होंगी, राइट। ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुई ये भी डिप्लॉयड होंगी, राइट। डिप्लॉयड मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। 2x क्रोमोसोम रहेंगे, जैसे 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, राइट। तो ये भी डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होती हैं, डॉटर सेल्स जो होती हैं ये डिप्लॉयड। नहीं, अब जो भी है, मान लो अगर अगर ये जो है, अगर मान लो एक ये जो होता है, ये वाला जो होता है ये मियोसिस में होता है। ये मियोसिस में होता है इंटरचेंज, जो आपके सिलेबस में शायद अभी नहीं है। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल्स बनती हैं। डिप्लॉयड सेल्स मींस कि उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, राइट। जैसे इसमें अगर हम अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर से 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट, तो इसमें भी 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, राइट। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो करेक्टर्स डज नॉट चेंज जनरली, राइट। जो एक होता है, तो ये जो होते हैं ये हमारी जो जर्नल सेल्स होती हैं, यू कैन से कि these are non-genetic cells, non-genetic genetic cells। मतलब ये जो होता है ये हमारे पूरी बॉडी में सब जगह यही होता है, मतलब माइटोसिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। स्किन की सेल्स जो होती हैं वो हमेशा स्किन की सेल ही फॉर्म करेंगी, दे आर डिप्लॉयड, राइट। जो हमारी दूसरी सेल्स है वो डिप्लॉयड माइटोसिस टाइप का ही सेल डिवीजन होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि वहां पे हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। तो जनरली जेनेटिक सेल्स में ये होता है, राइट। तो इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें जो तुम्हारी ये जो डॉटर सेल है, जेनेटिक सेल्स की जो जो सॉरी जो पेरेंट सेल है, ये आपको 4 पेयर देती है, 4 पेयर ऑफ सेल्स, जेनेटिक सेल्स, राइट। 4 सेल्स फॉर्म होती हैं। दिस इज डिप्लॉयड, मतलब इट इज हैविंग ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और ये सब जो होती हैं, ये चारों जो होती हैं ये हैप्लॉयड होती हैं। हैप्लॉयड मतलब जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि ये 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 16 में अब क्या होगा कि सब में 8 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे,
8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सब में होंगे, ये हैप्लॉइड हो गई। और जब ये दोनों सेलें आपस, तो ये जेनेटिक सेल्स है, मतलब या तो ये स्पर्म होगा, मतलब या तो ये पॉलन ग्रेन्स होंगे, या ये ओवरी होगी, राइट। तो पॉलन ग्रेन और ओवरी जब फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, जब दोनों फ्यूज करते हैं तो जो सेल बनेगा वो डिप्लॉयड सेल बनेगा, है ना। तो अगेन यू गेट द सेम सेल। वरना क्या होगा, अगर इन वाली सेल के बीच अगर ये सेम तरह की होती तो क्या होता कि फिर आपके 16 16 32, तो मतलब 16 + 16 बिकम्स 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगला जो बना वो 32 क्रोमोसोम्स का हो गया, तो क्रोमोसोम्स बढ़ गए तो कैरेक्टर बदल गए, ठीक है ना। तो नेचर ने मेंटेन के लिए क्या कर रखा है कि जो हमारी बॉडी में जो जो करेक्टर जो जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस टाइप का होता है, और जो जेनेटिक लेवल पे होता है, जो जेनेटिक सेल्स में होता है वो मियोसिस टाइप का होता है। और मियोसिस में डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, और वो हैप्लॉयड सेल्स आपस में, मतलब जब एक, मतलब ओवा जो होगा, जो ओवा सिक्रीट करता है तो वो एक हैप्लॉयड हुआ, और जो स्पर्म है वो भी एक हैप्लॉयड हुआ, और ओवा और स्पर्म जब आपस में फ्यूज किए तो वो उन दोनों के हैप्लॉयड हैप्लॉयड ने मिलकर उसको डिप्लॉयड बना दिया, है ना। जब वो डिप्लॉयड हो गए तो फिर वो ओरिजिनल इस पोजीशन पे आ गए। तो क्या हुआ कि वो आपका जेनेटिक करेक्टर जो है वो जेनेटिक चीजें प्रिजर्व रही। सेम इसीलिए कैट जो है वो कैट को बर्थ देती है, सेम काइंड ऑफ कैट होती है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि क्रोमोसोम का डिवीजन, लेकिन ये सिर्फ जेनेटिक सेल्स में होता है, ये नॉन जेनेटिक सेल्स में होता है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, राइट। ओके, should I rub this? Why? What do you think? Well done, man. अच्छा, should I rub? ओके, सो थोड़ा सा और हम लोग बेस में जाते हैं, राइट, कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स, they are found on, they are found on genes. Genes are genes are small fragments of DNA, right. With small fragments of DNA, they are transferred they are transferred they are transferred from parent to daughter, parent to daughter, right. अभी क्या हुआ, जैसे तो आपने देखा ना कि जैसे यहाँ पे ये एक सेल है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर ये राइबोसोम्स होता है, एंड इसके अंदर ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, राइट, विच आई टोल्ड यू दे आर कंटेनिंग जीन्स। जीन्स आर, राइट, जीन्स ये ऐसे नोड्यूल से बने हुए होते हैं, लाइक दिस, granulated, right. These are genes. Genes are small fragments of DNA.
right? What is the name of what is DNA? What is the meaning of DNA? बस, अबे डीएनए होता है डी डी ऑक्सी डी ऑक्सी रिबो रिबो न्यूक्लिक डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक 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 एसिड, राइट? इट इज कॉल्ड डीएनए, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? अभी मैंने आपको बताया था एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? भूल गए? ये पेंटोज शुगर, राइट? ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? और उस डीएनए स्ट्रैंड के स्मॉल पोर्शन को हम जीन्स बोलते हैं, राइट? उसको हम जीन्स बोलते हैं। जैसे कि अब इसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, राइट? मैं अबे सुन ले पहले नहीं। एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमीन, 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 थाइमीन एंड साइटोसिन। क्या? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, राइट? अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि एडेनिन थाइमीन के साथ में कंपेयर करता है। क्या? एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ में पेयरिंग करेगा, राइट? और आपका जो गुआनिन है ये साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करेगा। यू लर्न दिस, राइट? It is written in your book that adenine pairs with thymine, right? And guanine pairs with cytosine. तो इनकी पेयरिंग इसके साथ हुई। ये अब आपको याद कर लेना है एकदम। यू शुड लर्न लाइक एनीथिंग, राइट? जैसा आपके कंप्यूटर में होता है ना, सारा 0101 का खेल होता है, राइट? 0101 का ही तो खेल होता है ना कंप्यूटर में। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, एंड या बाइनरी डिजिट्स आर देयर। एंड जो मशीन लैंग्वेज होती है, व्हाटएवर यू आर प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब मशीन कन्वर्ट्स इनटू इन बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज दैट इज इन 01। it takes मिलियन मतलब मिलियंस ऑफ सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो डिसीजन लेता है। लेकिन आप जो भी करते हो वो हमेशा 01 के फॉर्म में इंटरप्रेट होता है, राइट? बाकी एक होती है मशीन प्रोग्रामिंग, एक होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो जो यूजर एंड पे होता है जनरली वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन मशीन लेवल पे उसका इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ 01 के फॉर्म में होता है, ठीक है? वैसे ही हमारी बॉडी में जो नेचर ने करेक्ट किया, जो कनेक्शन किया है, वो ये किया है कि हमारा नेचर में सिर्फ इन 4 का खेल है। अगर ये सीक्वेंस बदल गया तो प्रोटीन बदल गया, और प्रोटीन बदल गया तो करेक्टर बदल गया, करेक्टर बदल गया तो हो सकता है कि इंसान से जानवर बन जाए, ठीक है ना? This is the biggest importance of this. And this is DNA, deoxyribonucleic acid. Should I rub this? मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ।
देखिए फिर एक चीज, इट इज कॉल्ड, क्या होता है पता, व्हाट इज मीन्स डीएनए, क्या होता है हैं? डी ऑक्सी रिबो रिबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, राइट, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अभी क्या है कि ये जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। डबल हेलिकल समझते हो? बेल्ट देखिए, दो बेल्ट को आपस में लो और जोड़ दो तो वो क्या करती है, वो कुछ ऐसे बना लेती है, ऐसा बन जाता है ना स्ट्रक्चर, ऐसा। दो चीजों को आपस में मिला दो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, नहीं बनता है? तो अब इसमें क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इसके ये जो है ये सब पेंटोज शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट इधर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसके साथ ये जो नाइट्रोजनस बेस लगा है, सपोज यहाँ पे ए लिखा मैंने, अगर यहाँ पे ए, हाँ, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये फॉस्फेट है। अबे नहीं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट तो एक मॉलिक्यूल उसके साथ लगा होता है, ठीक है ना। सॉरी, ये अगर मैं गलत बोल गया हूं तो ये जो है ये हमारा पेंटोज शुगर की लाइन चल रही है, शुगर के स्ट्रैंड है। इसके साथ में एक तरफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। अब ये एडेनिन के साथ में क्या लगेगा, एडेनिन के साथ में थाइमीन लगेगा, तो हमने एक ही लिख दिया, राइट। और गुआनिन के साथ में साइटोसिन लगेगा, फिर गुआनिन के साथ में साइटोसिन लग गया, फिर यहाँ पे गुआनिन के साथ में साइटोसिन और एडेनिन के साथ में थाइमीन, फिर एडेनिन के साथ में थाइमीन, फिर एडेनिन के साथ में थाइमीन, राइट। फिर ये एडेनिन के साथ में थाइमीन, फिर गुआनिन के साथ में साइटोसिन। हो सकता है कि साइटोसिन तो इधर गुआनिन आ जाए, अब इधर, हाँ, अब इधर इधर तुम्हारा थाइमीन आ गया तो इधर की तरफ एडेनिन लग गया, इधर की तरफ साइटोसिन आ गया तो इधर की तरफ गुआनिन लग गया, राइट। अब ये हमारी कोडिंग हो गई। अब ये एक पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं, ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको हम जीन्स बोल सकते हैं। ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड जीन्स, राइट। एंड इट इज हैविंग इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है। इसका मतलब हो सकता है कि बुद्धिमान आदमी हो, तो अब डीएनए, अब प्रथम का डीएनए देखना पड़ेगा कि वो बुद्धिमान की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, उसकी कोडिंग को चेक किया आता है कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन इस तरह से चलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव जीन्स। अभी क्या है, जब हम इसको रिकॉइल करते हैं, मतलब जब इसको अनकॉइल करते हैं, राइट। जब इसको अनकॉइल करोगे तो क्या होगा, इधर वाला मिटा दूं ये, हम्म, तो क्या होता है कि अब ये इसको जब हमने, ये कॉइल्ड है, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, राइट। और इसके बाद हमने क्या किया, ये डीएनए स्ट्रैंड अनकॉइल्ड हो गया, ये कॉइल्ड है मतलब आपस में मिला हुआ है, यहाँ पे ये अनकॉइल्ड हो गया, ठीक है। अब ये अनकॉइल्ड हो गया तो अब क्या है, इसके वाले सारे पकड़ो, जो ये वाला स्ट्रैंड चल रहा है तो AGG, राइट, यहाँ पे लगा दिया AGG, राइट। फिर इधर आए तो ये हुआ CTT, फिर आए तो
टी टी, राइट। फिर इधर आए तो ए जी सी, फिर इधर आए तो ए जी सी, राइट। इतना पकड़ लेते हैं, ये हो गया। अब इधर वाले को देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, टी सी सी, ऑब्वियसली टी सी सी, ये हो गया, ये हो गया सी, तो ये टी, फिर ये सी, फिर ये सी है, नहीं, सी के साथ, सॉरी सी के साथ जी लगना है, सी के साथ जी लगना है, ठीक है। और टी के साथ ए लगना है, तो ये ए लग गया है, हाँ ये ए लग गया है इधर, ये ए इधर रहा होगा, इधर फिर टी आ गया, फिर इधर सी आ गया, फिर इधर फिर इधर जी आ गया, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गए, राइट, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गए, इसको बोलते हैं आरएनए, इसको बोला जाता है आर एन ए, राइट। आरएनए का मतलब क्या हुआ, रिबो रिबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आरएनए, दैट इज, ये भी आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए कहलाते हैं, उनको रिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये अनकॉइल्ड होके चले गए, ठीक है। और जब ये चले गए, जहां पहुंचे, इनकी इतनी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इन्होंने फिर से क्या किया, कि इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना लिया अपना प्रोटीन का, फिर ये आ गया स्ट्रैंड, इसका इधर आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे एडनिन के साथ में, एडनिन के साथ में टी लग गया, गुआनिन के साथ में सी लग गया, फिर सी लग गया, फिर जी लग गया, फिर ए लग गया, फिर ए लग गया, फिर टी लग गया, फिर सी लग गया, और जी लग गया, राइट। और फिर इधर इधर क्या हुआ, ए के साथ में, टी के साथ में ए, जी जी टी टी टी, राइट, फिर ए, फिर जी, और फिर सी। तो अब क्या हो गए, एक डीएनए के दो डीएनए हो गए, क्या, एक डीएनए के दो डीएनए हो गए। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड, ये हुआ हमारा कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग। अब फिर ये आरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएनए में, डीएनए इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। सो इस तरह से कॉइलिंग एंड कॉइलिंग होती है, डीएनए मतलब आरएनए फॉर्म होते हैं, फिर काउंटर सेल फॉर्म होता है, फिर डीएनए फॉर्म होता है। अब ये दो दो जीन्स फॉर्म हो गए, राइट। अब ये ट्रांसफर हो जाएंगे, अब ये अलग अलग पहुंच चुके हैं, तो ये अब अपना पार्ट इन्होंने, अब इसने अपना एक जीन्स बना लिया। अब ये जीन्स फिर दूसरी सेल में जाएगा, तो फिर दूसरी सेल से जाके फिर ये इसी तरह का काम करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ, इसीलिए एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है और यहाँ जो सीक्वेंस है एकदम सेम है, जीरोक्स कॉपी है। तो जो इसके फंक्शन है वही इन दोनों के फंक्शन है। अगर ये सीक्वेंस बदल जाता, कहीं मान लो गलती से बदल जाए, तो प्राणी बदल जाएगा, ठीक है। So I hope this much is sufficient for this time to understand genes, DNA strand, and how DNA strand work. Small मतलब DNA strand की जो smaller nuclear unit होती है, that is called nucleotide, that is having a pentose sugar, phosphate molecule, and nitrogenous base. These nitrogenous base, there are four kind of nitrogenous base: adenine, guanine, thymine, cytosine. एडनिन के साथ, हाँ, एडनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, यही सीक्वेंस चलता है।
राइट, एंड इसी तरह से डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आरएनए से डीएनए फॉर्म हो जाता है। अब ये फिर सेल डिवीजन, अब इसके आगे हम लोग अब जो आएगा वो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक में डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म होते हैं, एक में दैट इज माइटोसिस, राइट। माइटोसिस में डिप्लॉयड टाइप ऑफ एंड और मियोसिस में हैप्लॉयड टाइप होता है, वो जेनेटिक सेल्स में होता है। और माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में, मतलब हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें होता है, राइट। तो उन सेल्स में होता है। तो जेनेटिक सेल्स में मियोसिस का टाइप, क्योंकि वहां पे हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो जेनेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, तुम्हारे में शायद आपके सिलेबस में शायद अभी माइटोसिस ही होगा। फिर तीन फेज होते हैं उसके, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज प्रोफेज एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, लाइक दिस ना। देयर आर थ्री फेज। उसके बीच में एक पीरियड होता है जिसमें कि रेस्टिंग फेज होता है, जहाँ पे सेल अपने को प्रिपेयर करती है दूसरे सेल डिवीजन के लिए। एक सेल डिवीजन खत्म होने के बाद दूसरा सेल डिवीजन था, बिकॉज प्रोसेस कीप ऑन गोइंग, राइट। तो उसको जी फेज बोलते हैं शायद, है ना। तो दिस मच इज फॉर दिस टाइम, यू गो स्टडी दिस एंड देन आई टेल यू फर्दर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।